So just start from beginning, just install Windows Server. I will install Windows Server 2022. This is working as my AD server. Click on browse this PC, D drive, VMware. I am creating a fresh folder which is the Active Directory Windows Server 2022. Then click on next, store virtually as a single file, 100 GB space recommended, 2 GB RAM. Then click on finish over here. Then go to CD/DVD SATA. CD/DVD SATA. What I am selecting here? Just selecting here Windows Server. Windows Server 2022. Display what I do, display turn off 3D, option advanced, what I am selecting. Here selecting here enable secure boot, then click on OK. Power on this virtual machine, left click on this virtual machine, press any key to boot and enter. So this is what you are installing a server operating system. That operating system where available, that operating system available in workgroup only. Because when you are installing any type of server, that by default it's available in workgroup only. The review section, I'm getting only 1, 2, 3, 4, 5, 6 reply. So, Sri Chandan, Ravi Rajneesh, Kishore Bari, Akash Verma, Anup Misra, Akshay only. तो जो भी है अपना साइट से एक बार रिव्यू शेयर कर दो प्लीज। 5 दे दो, 1 दे दो, 0 दे दो, कुछ भी दे दो, बट प्लीज डिस्क्राइब विद द कमेंट सेक्शन में वो लिख दो कि मतलब व्हाट इज द रीजन। ठीक है, प्लीज, दैट इज माय रिक्वेस्ट। और लिंक मैंने शेयर कर दिया है। सो राइट नाउ वेयर आई गो जस्ट ओनली क्लिक ऑन नेक्स्ट ओनली। यहाँ पे हमको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। विच वर्जन आई एम इंस्टॉलिंग हियर, जस्ट ओनली इंस्टॉलिंग हियर the last version I'm installing here. Which version I'm installing here? Windows Server 2022 Data Center Evolution. Then click on next. Accept the license term. Then click on next. Click on custom. Here we need to convert MBR to JPG. ज्योति प्लीज कमेंट में थोड़ा रिव्यू दे दो। सिर्फ तुम्हारा नाम डालने से नहीं होगा, कमेंट में तुम्हारा अपना नाम डाल, मतलब अपना कमेंट डाल दो। So first of all, where I go, just go to this part. Then I go to list disk. Then where I go, just go to select disk 0. Then clean. Then convert GPT. After convert GPT, list disk is equal to star. Exit from where this part, again exit from CMD and then click on next and install. Is it possible to increase? Yes, you just press here task mgr. After task mgr, where you go, just click on process step, setup.exe, set priority real time, change priority. Setup.exe, set priority real time, change priority. It's already installing right now. Now what I do, now I'm also deploying the client operating system also. हम इसके साथ साथ क्लाइंट ओएस को भी इंस्टॉल करेंगे। बिकॉज टुडे आई डिस्क्राइब विच इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले तो हमको डोमेन कॉन्फ़िगरेशन करना है। यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन कॉन्फ़िगर एनी टाइप ऑफ रोल, बट यू मस्ट एनेबल व्हाट रोल, यू मस्ट एनेबल द डायरेक्टरी रोल। सबसे पहले तो एडीडीएस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वी आर आल्सो डिप्लॉइंग द क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम द बैकअप। मैं बैकअप से क्लाइंट को डिप्लॉय कर रहा हूँ। What is the client location? The client location available in this particularly VMware. Under the VMware, I am creating one folder which is computer one and paste this. Go to computer two and paste this. अभी तुम बोलोगे सर ये आपने क्यों किया? बिकॉज इफ यू
क्रिएटिंग फ्रॉम द क्लोन, यदि तुम क्लोन से बनाओगे तो तुम्हारा बहुत टाइम सेव होगा। इफ यू आर if you are creating manual virtual machine, that's taking minimum 40 minutes. If one virtual machine takes 20 minutes, two virtual machine take 40 minutes. So that's why you always remember to configure. Everyone clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Any question, any doubt? सर ये जो कमेंट आपने दिया है, हेलो हम्म। सर, ये क्या मतलब करना क्या है सर इसका? कौन सा कमेंट मतलब बताओ? ये क्या सर, अभी ये आपने रिव्यू ये का? जो फीडबैक फॉर्म, हाँ हाँ सर, क्या मतलब एक वो कंप्लेंट तुम वगैरह क्या लोगों है का सर? प्रॉपर रीजन जानना है, मतलब वो कुछ कुछ लोग 0 1 2 3 दे रहे हो ना, उसका रीजन सिर्फ जानना है बस। सर सर कहाँ पे 0 1 2 3 दिया है हम लोगों को? अभी भी दिखाया तो। सर कुछ लोग दिया है दिखाइए रिव्यू। सर। तो अभी हमको कहाँ पे जाना है, कौन सा फाइल को ओपन करना है? जस्ट ओनली ओपन द वीएम वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगरेशन फाइल। सर एक चीज सिर्फ बोलूँ सर? कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ओपन करना है। सर हेलो। हाँ बोलो। सर ये जो थोड़ा सा आपने स्पीड में बताया था वो थोड़ा सा नहीं समझ में आया था सर इससे पहले। स्पीड में बता रहा हूँ। नहीं अभी तो ठीक है सर, अभी तो अच्छा सर सही है। क्योंकि ये सब सर हम लोगों ने देखा हुआ है, तो ये तो हमारा रिवीजन हो रहा है। हम्म। तुम्हारा जहाँ पे क्वेश्चन है ना, जहाँ पे प्रॉब्लम है, जस्ट एक बार हाथ उठा देना कि सर आए पे प्रॉब्लम, या सर मैंने मैसेज किया कर था दो। बट आपने नोटिस नहीं किया वो। अच्छा तो मैसेज कर देना प्लीज। देखो मैंने हाई मैसेज डाल दिया। ठीक है। हाँ ओके सर ओके। हाँ। चैट सभी लोगों के लिए अवेलेबल है, सब लोग एक बार अपने साइड से अनम्यूट करके या चैट में जाके न्यू चैट में अपना मैसेज डाल देना। ओके सर, ओके। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। क्योंकि अनम्यूट करके रखेंगे तो बैकग्राउंड वैसा आएगा। सर हाँ सर ये बात तो है। क्योंकि देखो मेनली क्या प्रॉब्लम है, टाइम बाउंडेशन है 2 घंटा। अब 2 घंटा यस में सर। प्रॉब्लम सॉल्व करो, 2 घंटा में न्यू टॉपिक पढ़ाओ, तो 2 घंटा में इसी टाइम के अंदर सिलेबस को कंप्लीट करो, सिस्टम का कंपेटेबिलिटी चेक करो। तो ये सब तभी होगा जब तुम लोग कोऑर्डिनेट करोगे। एम आई करेक्ट? ऑब्वियसली सर, यस सर यस एम सर। आई करेक्ट? यस सर। यस टाइम सर। बाउंडेशन यदि नहीं रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि 2 घंटा क्लास को हम 5 घंटा लेके जाए या 3 घंटा लेके जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए सर तुम दो देखोगे घंटा 12 बजे सर हम बैच का, लोगों के कभी दिमाग कभी में जो भी दो बैच है वो घंटा ऑलरेडी रहता है टू सर, लेकिन थर्टी फिर आगे का कभी काम टू तो फोर्टी रुक फाइव जाता होता था विंडोज के बैच में। तुम लोगों ने कभी देखा कि 2 बजे बैच में ही, मतलब 12 से 2, मतलब 2 बजे खत्म हो गया, ऐसा कभी हुआ है? नहीं। है। नहीं सर। Also, हाँ सर, हम हमारा तो वैसे ही होता था कि 12 से 2 है तो 2 बजे खत्म। बाकी लोगों से पूछ लो जो लोग ओल्ड बैच से हैं। पता नहीं सर, तो बैच में तो जाता लोगों से कांटेक्ट है नहीं। यस सर, हमारे में यही होता था। और नाइट में 12 बज गए थे सर, हमने को 12 सवा 12 बज गए थे। जो लोग मेरा मेरा बैच से था, तुम लोगों ने कभी देखा था कि 2 घंटा में खत्म हो गया? नो नो सर। सर। कभी नहीं भाई। सर एक्स्ट्रा हाँ वो 15 तभी 30 होता मिनट है यदि एक्स्ट्रा तुम्हारा आया। 10 to 12 है तो। क्योंकि 10 to 12 को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, मैक्स टू मैक्स 12 और 5, बिकॉज 12 PM हैव ए न्यू बैच, राइट? यस सर। रात को बारह इसीलिए पाँच बजे तक कोऑर्डिनेशन, क्लास हो रहा था। इसीलिए कोऑर्डिनेशन कर दोगे तो थोड़ा अच्छा ही रहेगा भाई। ठीक है। दैट इज माय रिक्वेस्ट। सर सब क्योंकि कोऑर्डिनेट मैसेज करेंगे अनेबल है, सर। मैसेज में जाके भी डाल सकते हो। नहीं सर, ओके सब सर। कोऑर्डिनेट करेंगे हम लोग। ठीक है चलो हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ऑल्सो ओपनिंग द कंप्यूटर 2 ऑल्सो। मैंने कंप्यूटर 1 तो ओपन कर दिया, 2 को भी ओपन करना है। व्हाट फाइल ओपन? वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगरेशन फाइल। इसी फाइल का भी नाम हम लोग क्या देंगे? सेम प्रोसेस। इधर भी हम लोगों ने नाम क्या देंगे? जस्ट असाइन हियर कंप्यूटर 2
Windows 10 Professional, power on this virtual machine. अभी सभी लोगों का माइंड में क्वेश्चन होगा, सर ये जो हम लोगों ने विंडोज को एनेबल कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर को एनेबल कर रहे हैं, ये हर एक सर्वर में भी सेम प्रोसेस है क्या? यस। If you use Windows Server 2012, same process. If you use 2016, same process. Windows Server 2019, same process. 2022, same process. 2025, same process. 2008, same process. क्योंकि सबसे पहले बिल्ड इन एडमिनिस्ट्रेटर एनेबल हो जाता है। यू ओनली पुट द पासवर्ड, सिर्फ तुमको यहाँ पे पासवर्ड पुट करना है। व्हाट यू मेंशन abcd@1234, abcd@1234। ये कौन सा पासवर्ड है? दैट इज द बिल्ड इन एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड। एडमिनिस्ट्रेटर इज यूजर नेम, पासवर्ड इज abcd@1234। यूजर नेम इज व्हाट? यूजर नेम इज एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड इज abcd@1234। 1, 2, 3, 4. एडमिनिस्ट्रेटर इज यूजर नेम, पासवर्ड इज ABCD at the rate 1, 2, abcd@1234। 3, 4. ये जो सर्वर है ना, ये सर्वर को हमने क्लोन नहीं कर सकते। बहुत लोग इसी में क्वेश्चन पूछते हैं, सर हम एक सर्वर से क्लोन करके हम दूसरा सर्वर बना सकते हैं? यू कैन, बट यू आर फेसिंग द एसआईडी प्रॉब्लम। एसआईडी का इशू आ जाएगा। दैट्स व्हाई यू डोंट डू टू क्रिएट ए virtual machine from clone. You can create virtual machine from clone. Windows 10 Pro you can, okay. Windows 10 Pro को तुम क्लोन से बना सकते हो, but don't create a clone virtual machine, the server virtual machine. तो ये SID प्रॉब्लम Everyone क्या है सर? remember it. Any question? सर SID प्रॉब्लम क्या है सर? SID क्या है? तुम लोगों ने हाइपर वी का क्लास किए थे? हाइपर वी Yes, इंपोर्ट sir. एक्सपोर्ट, यस सर। हाइपर वी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नॉलेज है? नो और यस? इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं No, पता sir. सर इसमें क्या? यस सर। हाइपर वी का बताया था कि जैसे हाँ, VMware हाइपर वर्क वी करता का है ही मैं वैसे बता रहा हाइपर हूँ। वी हाइपर भी वी हो। का इंपोर्ट एक्सपोर्ट। नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नहीं पता सर, पर हाइपर वी हाँ, पता है कि वो VMware जैसे ही वर्क करता है, जैसे VMware वर्क करता है वैसे ही हाइपर वी भी वर्क करता है। नहीं वो मैं इनबिल्ट ही रहता है मैं लैपटॉप के ये नहीं अंदर। पूछ रहा हूँ तुम्हारा, वो क्या बोल रहे, वो नहीं पूछ रहा हूँ। यस सर। मैं सिर्फ कुछ प्रोसीड्यूर पूछ रहा हूँ। नो सर, नहीं पता सर इंपोर्ट नो एक्सपोर्ट। सर, वो नहीं देखो, पता है। ये हाइपर वी में ना 3 पर्टिकुलरली टूल्स आता है। मतलब जब तुम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे तो तुमको दो पिक टोटल 3 सेटिंग्स मिलता है। कौन कौन सा यस सर। सेटिंग्स? यू आर गेटिंग दैट 3 डिटेल्स, ये 3 डिटेल्स तुमको देखने को मिलेगा। क्या क्या है? रजिस्टर द वर्चुअल मशीन इन प्लेस, यूज द एग्जिस्टिंग यूनिक आईडी, यूआईडी, यूनिक आईडी, एसआईडी, जो भी बोलोगे। एसआईडी क्या है? एसआईडी एक यूनिक आईडी है। तो ये 3 सेटिंग जो है, ये तुम्हारा VMware में नहीं आता है, ये हाइपर वी में आता है। इंपोर्ट वर्चुअल मशीन, तो तुमको क्या करना होगा? जस्ट क्लिक ऑन द लास्ट वन, कॉपी द वर्चुअल मशीन, क्रिएट ए न्यू यूनिक आईडी। यदि तुमने न्यू यूनिक आईडी बना दिया तो तुम कोई भी कितना भी VM बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एवरीवन क्लियर? प्लीज कंफर्म। यस सर। यस। दिस इज द पार्ट ऑफ व्हाट? दिस इज द पार्ट ऑफ हाइपर वी इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ये हाइपर वी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसेस है। बट ये चीज क्या VMware में अवेलेबल है? इन नो VMware दैट सर। इज नॉट अवेलेबल। नो सर। VMware में तुम क्लोन कर सकते हो, कॉपी क्लोन कर सकते हो, लिंक क्लोन कर सकते हो, बट यू कैन नॉट क्रिएट ए न्यू यूनिक आईडी। ओके ठीक है? सर। दैट्स व्हाई वी डोंट डू दिस पर्टिकुलर स्टेप्स इन द सर्वर। इसीलिए हम लोग सर्वर का प्रोसेस नहीं कर सकते। तुम कर सकते हो, यदि तुम बोलोगे सर हम सर्वर 1 के लिए सर्वर 1 को क्लोन करके रख देते हैं। I just creating a server that is a AD server and then clone it. We are configuring the ADC server and then clone it. Separate clone is working, but copy clone is not working. तो उसके लिए क्या करना ओके है? सर। Just only create a new virtual machine. So that's why you can create a number of virtual machine from the client PC. Client OS तुम कितना भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं. Don't face any problem.
But if you use the server, you always remember, you always to create a new virtual machine. Clear everyone? Don't forget. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. First of all, we are also changing the time zone also. What time zone selected here? Chennai, Kolkata, Mumbai, New Delhi. Time zone is very important because you are configuring the Indian state, Indian time. So that's why I just selected 10 of 47 AM. Now what I do? Now we are changing the basic information. Basic information, I hope everyone understand and remember also. If you change the hostname, go to sysdm.cpl. If you change the IP addresses, go to ncpa.cpl. ncpa.cpl. When you changing the firewall settings, go to firewall.cpl. firewall.cpl. Everyone remember this particularly 4 comments. ये 4 comments तुमको तो जरूर पता होना चाहिए. If you are Yes. already from old batch, प्लीज रिमेम्बर दिस. इसको भूलना नहीं है. चाहे तुम सर्वर ओएस इंस्टॉल करो, यू आर मैनेजिंग सर्वर ओएस, यू आर मैनेजिंग क्लाइंट ओएस, you don't forget this to manage. Everyone clear? Please confirm. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Because this is mandatory information when you are changing the basic information. So at first what I do, at first we are changing the host name first. Because this name is easy to remember. Win minus Q30 R1 CTV G2. Is it easy to remember? That is not easy to No, sir. remember. Sir. So what is the mention? I just mention here server name is server 1. And by default, where it is available? By default, it's available in work group only. Work. I hope everyone understand voice mic response. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Next, we are also changing the IP addresses. Ethernet 0, click on properties, Internet Protocol version 4. Which IP assign here? कौन सा IP हम allocate करेंगे? Just only allocating the IP which is 192.168.1.10. 2.5, 2.5, 2.50. Gateway what I mentioned 192.168.1.1. 1.1. And DNS what I mentioned 192.168.1.10. 1.10. If you tell me why, sir, because I already allocating there is total 3 IP addresses I take. One is the 1.10 and one is the 1.20 and one is the 1.30. Another all informations are same. Subnet mask default gateway DNS same. In computer 1 also same. In computer 2 also same. Everyone remember, don't forget it. If you Yes. have any Yes. question, please reply. अभी सब लोगों का माइंड में क्वेश्चन होगा, सर आप जो गेटवे यूज कर रहे हो, क्या मतलब हम सर इस अगर गेटवे इसमें को जितने भी क्लाइंट्स माइनस होते कर हैं सकते हैं? इज इट पॉसिबल टू हेलो रिप्लेस द गेटवे? यस, नो प्रॉब्लम. तो उसके लिए तुमको ये राउटर वगैरह सब कुछ को रिमूव कर दो. देयर इज नॉट रिक्वायर्ड एनी गेटवे. एवरीवन क्लियर? गेटवे रिक्वायरमेंट, वॉइस माइक रिस्पॉन्स. अभी गेटवे Yes, sir. जरूरी है? अभी कोई गेटवे Yes, sir. जरूरी नहीं है. इफ यू आर नॉट कंप्यूट, इफ योर क्लाइंट एंड सर्वर नॉट आर कनेक्टेड विद द राउटर, यदि तुम्हारा इंटरनेट नहीं है, फाइबर कनेक्शन नहीं है, देयर इज नॉट रिक्वायर्ड एनी गेटवे. नाउ क्लियर? गेटवे ऑब्लिक राउटर कॉन्सेप्ट, वॉइस माइक रिस्पॉन्स. Yes, sir. Yes, sir. तुम बोलोगे नहीं सर, आई ऑल्सो नीड इंटरनेट ऑल्सो एंड डोमेन शुड बी कनेक्टेड. Internet also required as well as we need the domain services also. Domain DNS receiving from server sides. But where you are receiving the internet from, you are getting internet from the ISP. So that's why what is important? Must be important the everything. Because where you are getting the internet, first ISP provided, ISP distributed this connection to the fiber. That fiber input is the input received to the media converter and output is RJ45 cable. That RJ45 connected to the router WAN port. That router WAN port have a LAN port. That LAN port directly connected with the switch. Everyone clear? Voice mic response. Then I go to next. The communication part is very much important. How network distributed, how internet distributed, that is always remember. दिस इज व्हाट, दिस इज आईएसपी. ये कौन है? ये आईएसपी है. जियो, एयरटेल, टाटा कम्युनिकेशन प्रोवाइडिंग द एंटरप्राइज इंटरनेट. दैट इंटरनेट वेयर रिसीव? फर्स्ट रिसीव्ड बाय द मीडिया कन्वर्टर. होम डिवाइसेस यूज द ओएनयू. घर के लिए हम लोग क्या डिवाइसेस यूज करते हैं? ओएनयू डिवाइस, ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट. But when you are going to organization or you can see the enterprise network,
you can see what? You can see the media converter, where SFP port is also there. That directly connected with two fiber pictel input to the media converter. That media converter connected to the router WAN port. ये router का WAN port में connected होगा. And then from the LAN, that particularly switch is connected. Everyone clear the source of 1.1? Everyone clear ONU source क्या of बोला सर? Ethernet? Yes, sir. ONU Any question? Raise your hand. यदि किसी का क्वेश्चन है तो पहले रेज योर हैंड क्विकली, हाँ, क्योंकि टाइम बहुत फ्लेक्सिबल है. स्टूडेंट प्लीज रिप्लाई क्विकली, थोड़ा जल्दी रेस्पॉन्स करना. श्री चंदन टेल मी. ONU के बारे में क्या बोला? वेन्यू के बारे में और बताओ. मीडिया कन्वर्टर तो पता है, ONU और फिर पता नहीं है. ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलरली डिवाइस देख रहे हो श्री चंदन, ये है वेन्यू. Yes, sir. जो घर में डिवाइस, ये पर्टिकुलरली घर घर के लिए यूज होता है. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में तो अभी ये डिवाइसेस यूज होता है यदि तुम्हारा स्मॉल ब्रांचेस है. ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है? इनपुट होता है फाइबर और आउटपुट क्या होता है? आउटपुट होता है RJ45. दैट RJ45 वेल कनेक्टेड, दैट इज कनेक्टेड विद द राउटर वैन पोर्ट. राउटर का वैन में लगता है. एंड देन LAN टू डिस्ट्रीब्यूटेड द कनेक्शन, और यू कैन कनेक्टेड विद द वाईफाई ऑल्सो. यदि तुम्हारा वाईफाई राउटर है तो वाईफाई से डायरेक्टली कनेक्ट होगा. इफ यू आर यूज द वेड कनेक्शन देन यू मस्ट यूज द स्विच ऑल्सो. यदि तुम चाहो तो स्विच भी यूज कर सकते हो. This is the particularly media converter. These two ports, ये जो दो पोर्ट है, ये कहाँ पे कनेक्टेड होगा? ये दो पोर्ट कनेक्टेड होगा SFP के अंदर. ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है. ऑर्गेनाइजेशन में तुमको ONU डिवाइसेस यूज नहीं होता है. व्हाई? बिकॉज हियर द bandwidth limitation is too much high. If any branches receive the 10 gig ports, मान लो 10 GB इंटरनेट चाहिए, तो ये डिवाइसेस यूज होगा. Which is the devices name? The devices name is media converter. Media. तो यहाँ पे तुमको दो पोर्ट देखने को मिलेगा. वन पोर्ट इज द फाइबर पोर्ट, where the input is fiber, and what is the output? The RJ45 is output. That port where it is connected, that port is directly connected to the router WAN port. ये राउटर का WAN पोर्ट में जाके लगता है. एवरीवन क्लियर? प्लीज कंफर्म. Yes, sir. और यदि बोलोगे सर हमारे पास कोर राउटर है, the organization have core router, L3 router. L3 router also have a particular pigtail ports. उसमें भी फाइबर लगाने का जाएगा है. ठीक है, ये सब हुआ है या नहीं हुआ है? तुम लोग चुपचाप हो, समझ में नहीं आ रहा है. एवरीथिंग इज डन तो इन पहला CCN बार और देखिए, कॉम दिया. ये सब हुआ है नेटवर्क डिवाइसेस में या नहीं हुआ है? नहीं हुआ था सर. तब क्या तुम लोग एंटरप्राइज सर्वर पढ़ रहे हो? क्या एंटरप्राइज सर्वर? CCN किया ना सब लोग? डायनामिक Yes, राउटिंग, sir. स्टैटिक राउटिंग, यस सर. कॉम DN प्लस, नेटवर्क डिवाइसेस, टोपोलॉजी, पैकेट ट्रेसर, हुआ है ना ये सब? Yes, sir. तो Yes, sir. कनेक्शन नहीं पता कि पीछे क्या केबल लगा रहेगा? व्हाट केबल्स आर कनेक्टेड प्रॉपरली? सर मीडिया कन्वर्टर के बारे में नहीं पढ़े थे सर, बाकी तो पढ़े ये थे. भगवान, मतलब ब्रॉड, मतलब इंडस्ट्री का नेटवर्क, एंटरप्राइज नेटवर्क के बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं, ये तो नहीं बताया था ये सर. भगवान. बस खाली हम लोग को बताया गया था क्या पोर्ट है, क्या यूज है उसका, और फिर वो टोपोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन सब. में ना तुम्हारा जितना भी सारे कंप्यूटर्स है, चाहे वो कितना भी बड़ा ब्रांच हो, देर इज बेसिकली थ्री टाइप ऑफ स्विच आर देयर. तीन टाइप का स्विच तो तुमको जरूर देखने को मिलेगा. वन इज द 24 पोर्ट स्विच, 48 पोर्ट स्विच एंड 64 पोर्ट स्विच. यस सर. ये स्विच देखने को मिलेगा, चाहे तुम कितना भी इंजीनियर बन जाओ, कितना भी डेटा सेंटर को मैनेज कर लो, लेकिन ये स्विच तो जरूर मिलेगा. स्विच ऑलवेज अवेलेबल, फाइबर पिक्टल ऑलवेज अवेलेबल, मीडिया कन्वर्टर ऑलवेज अवेलेबल, L3 राउटर ऑलवेज अवेलेबल. L3 राउटर के बारे में क्लियर करेंगे तो फिर डोमेन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि टाइम का बहुत कम है ना. बट एक बार क्लियर कर लो कैसे इंटरनेट तुम्हारा एंटरप्राइज नेटवर्क हाउ कनेक्टेड.
एवरीवन क्लियर? और एनी कंफ्यूजन प्लीज रिप्लाई। यदि कुछ कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, बताओ। ये तो हाँ कितना ना, तरह का मतलब राउटर थोड़ा होता है सर? रेस्पॉन्स करो। क्या? आप बोले कितना तरह का राउटर होता है सर? आप बोले एक L3 राउटर होता है, तो एल और थ्री भी होता राउटर है? इज दियर, L2 राउटर इज दियर। ठीक है। हाँ मैनेजेबल वो सब। राउटर, मैनेजेबल राउटर के बारे में पढ़ा था ना, सिस्को कैटलिस्ट। देखा कि नहीं देखा सीसीएलए में? नो सर। हाँ। नहीं सर, कैटलिस्ट ए का सिस्को कैटलिस्ट भगवान। राउटर कैटलिस्ट। तो फिर डायरेक्टली पैकेट ट्रेसर में जाके वो कॉन्फ़िग मोड, ग्लोबल मोड, वो डायरेक्ट बता दिया था। हाँ हाँ, वो कह सकते हैं। अरे यार, फिर हम ऐसे कैसे कॉन्फ़िगर कर, कैसे डिस्कस करेंगे फिर? क्योंकि ये तो राउटर है, दैट राउटर इज नॉट ए होम राउटर, दिस राउटर इज ए कोर राउटर। यहाँ पे जो राउटर होता है ना, ये कोर राउटर होता है। यस सर। ठीक है। नेटवर्क ट्रबल शूटिंग में मतलब कभी टाइम मिलेगा तो हम बता देंगे, तुम लोग थोड़ा बता देना। पहले यस मैं सर। इसका कंप्लीट कर लेता हूँ, नहीं तो ये वाला पेंडिंग हो जाएगा फिर। सो एवरीवन क्लियर अप टू नाउ? कनेक्शन इज क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ईगो मत लो भाई, रेस्पॉन्स करो। ईगो बाद में, ईगो क्लास के बाहर। प्लीज। अभिजीत प्लीज रिप्लाई, आकाश प्लीज रिप्लाई, अंकित प्लीज ओके सर। रिप्लाई, ज्योति प्लीज रिप्लाई, किरण प्लीज रिप्लाई। नाम से बता रहा हूँ, रेस्पॉन्स करो। किशोर प्लीज रिप्लाई, पारमिता प्लीज रिप्लाई, संजय प्लीज रिप्लाई। नहीं रेस्पॉन्स करोगे? सर एक चीज नहीं पूछना था कि सर डीएनएस सर्वर और आईपी एड्रेस सेम होता है ना? डीएन देखो, मतलब बेसिकली यहाँ पे डीएनएस में क्यों सेम आईपी डाल रहे हैं? Here also you can see 1.10 is also there and 1.10 is also there. ये मैं क्यों क्यों यूज कर रहा हूँ? Why? What is the reason? Because सो when you दैट वी कैन promoted this कम्युनिकेट server विद। to a domain controller, जब तुम यस सर्वर सर। को एज ए डोमेन कंट्रोलर में प्रमोट करोगे, when you promote this server to a DC, that time also you are also configuring the DNS also, because DNS also available in this server. अच्छा। यस सर। Okay? क्योंकि इसी सर्वर को ऐसे हम डोमेन सर्वर भी बनाएंगे, दिस सर्वर वन आल्सो वर्किंग एज ए डोमेन सर्वर as well as the DNS server as well. Because when we are configuring Active Directory, that time there is total two roles working. One is the ADDS role and one is the DNS role. यस Clear? यस हाँ सर। सर। यस सर। इसका क्वेश्चन था क्लियर? मेरा मेरा यस अंकित। सर। मेरा का नाम बोलो। अरे भाई बोले तो अंकित। अच्छा गुस्सा अंकित। करने से नहीं होगा भाई, बी कूल। सर गुस्सा नहीं हाँ। सर, वो हमेशा क्लास के बीच में हम कोई ट्रस्ट करते रहता है, इसलिए मैं हाँ, जल्दी। क्लास के बीच में ही तुम बताओ। क्लियर हो गया तो हाँ सर क्लियर हो गया, आई एम अंकित, हो गया, खत्म। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, क्विकली। हाँ सर क्लियर है सर, वरना सर फिर तो हाँ, पूछते क्लियर थे हो गया हमको कुछ सर। ना। क्योंकि मेडिसिन प्रॉपर मिलना चाहिए। इधर मेडिसिन ठीक ठाक नहीं मिला ना, तो इंटरव्यू में मेडिसिन इंटरव्यूअर दे देगा। थैंक यू, ट्राई आफ्टर नेक्स्ट टाइम। ले, समझ में आ रहा है? यस इसीलिए सर। इंटरव्यू क्रैक करने के लिए प्रॉपर मेडिसिन लेना चाहिए। नहीं सर, वो उससे बढ़िया वो लोग बोलते हैं क्या कि वी हाँ। विल लेट यू। I will और let वो you वी know. विल लेट यू लोग पता नहीं चलता कब होता है। अरे पता नहीं चलेगा तो वो तो बोलेगा तो हाँ सर, आई विल इन्फॉर्म यू, आई विल बी इन्फॉर्म यू। ले, तुम वेट करते करते तुम पता नहीं एक महीना निकल जाएगा, यू आर स्टिल वेटिंग फॉर दिस मेल। नहीं होता सर, है भाई 3-4 ऐसा। दिन बाद फिर ईमेल आ जाता है कि थैंक यू फॉर अप्लाइंग। हाँ, जब सिलेक्शन होगा तो भाई 2-3 दिन में कंफर्म। जैसे 2-3 दिन में नहीं आ रहा तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो हो गया। यस सर। So right now where I go? Right now the In Bandra. last confirmation is there, the firewall settings. बहुत लोग इसी में भी गलती करते हैं। Sir, if I disable the firewall settings, then what is going on? Your security is going to low. Don't turn off the firewall, okay? Because you are only checking the communication, so that's why you just only enable what? You are only enable file and printer sharing echo request message, which is for ICMP v4. What purpose? Use the ping status. Ping के लिए कौन सा प्रोटोकॉल काम करते हैं? Ping purpose only ICMP. ICMP v4 protocol is working. ICMP stands for Internet इंटरनेट का। Control Internet Message Protocol. message protocol. Internet Control Message Message Protocol. protocol. एक्सेस प्रोटोकॉल। जीवन क्लियर यस और सर। कंफ्यूजन? क्लियर सर। हम्म।
So right now what I do, right now I just enable this. Why enable this? Because echo request messages ping request to other nodes. Who is other nodes for server 1? Server That 1 के लिए other computer nodes one, कौन है? Who computer is two. other nodes for server 1? Computer 1 and computer 2, because these two computer working as a clients. So that's why what I do, I have to enable this. After that, where I go, now we have to do the restart. Because everything done, basic information all we are already changes. हर एक Yes, changes sir. को done किया है. Everyone clear? Yes, sir. Yes, sir. बस यही तो filter लगा रहे हो ना. Max to max 3-4 sound. Yes, sir. Yes, sir. If I silent, it's okay. Don't tell me, sir, are No, you sir. there? No, sir. No, sir. Here also you will doing the 4 changes. यहाँ पे भी इस सर्वर के साथ साथ क्लाइंट साइड में भी तुमको बेसिक चेंजेस करना पड़ेगा. Because basic changes verify your network, verify your identity, verify your firewall settings, as well as the communication between client and server. Realme RMX, what is your name? Realme RMX, what is your name? तुम लोग इंडिया से हो कि यूके से हो भाई? हमको तो यही समझ में नहीं आता. When I ask you any question, totally silence. So right now where I go, right now here also we are enable the administrator account. Where administrator password is what? Administrator password I mentioned 1 2 3 4 5. As well as what I do, as well as I disable the admin 2 also, because I don't need one second administrator account. Is it possible to delete also? Yes. Because why? Because this is not a built-in admin. Built-in is possible to delete. क्या No, हम sir. built-in को delete कर No. सकते हैं? Is it possible? That No, is sir. not possible. No, sir. No. The administrator activation done. Next we are changing the hostname also. What hostname I assigning here? Computer one. Computer one. Computer name is computer 1. Which name is good? Which name is very easily to identify? This Computer name is one. very good or Computer this name one. is very good? I hope everyone clear why we are changing the hostname. Yes, Yes, sir. Only for identification Yes, sir. purpose. Yes, sir. Next we are changing the IP addresses also. IP addresses what I mentioned 192.168.1.20 only. Yes, sir. Because already assigned what? In computer 1, 1.10. server 1, 1.10 is assigned. So in computer 1, what I'm assigning? Computer 1 assigning 192.160.1. 20. 1 20. dot 1 20. dot 20. 20. 1.20. 2.5 gateway 192.160.1.1. Not DNS mention 192.160.1.10. 1.10. Click on OK. Here also uncheck Internet Protocol version 6. Then click on OK. Then click on loading. Click on close. Here also the restart is pending. Next we are changing the firewall settings. Go to advanced settings. Don't click on turn Windows Defender firewall on or off. This is the wrong procedure. Just continue with advanced settings. Why share security issue? If you go to the turn Windows firewall on or off, voice plus. Yes, sir. So where I go, just only here enable both profile. Here you can see there is total 2 profile is available. One profile you can see for private and public and one profile for domain also. Domain. When your system join to work group, that time private and public is responsible. When system join to the domain, that time domain is responsible. So right now what I do right now enable for both profile. Private and public also enable and domain also Domain enable. also enable. Enable. So both side we have enable here, then click on cross, then click on cross, then click on OK, then click on close and restart now. restart. Any question up to now from anyone? No, No, sir. sir. No, sir. Anyone? Anyone? Hello?
Silent. I am also silent. Sir, No, sir, no, not sir. yet. Sir, noise. Oh, sir. Clear, sir. Here are also doing 4 changes. Yes, sir. यहाँ पे भी हमको 4 चेंजेस करना होगा, which I already डिस्कस, जो अभी अभी डिस्कस किए थे। ये वाला जरूर है 100%। ओके, Yes, sir. Yes, sir. दिस इज ओनली फॉर द आइडेंटिफिकेशन। you are a proper client, you first change the basic information first. At first you enter the secure password. Administrator is username, password is 12345. Admin 2 is not सर अगर required, so I पासवर्ड have to चेंज नहीं करेंगे disable तो क्या this। होगा? हाँ, सर अगर एडमिनिस्ट्रेटर का यहाँ पे पासवर्ड चेंज नहीं करेंगे तो नहीं काम करेगा क्या? आगे यूजर ऐड नहीं होगा? जोर से बोलो, मेरे कान में थोड़ा प्रॉब्लम है। हेलो, सर बोल रहे थे कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर में पासवर्ड चेंज नहीं करेंगे तो यूजर ऐड नहीं कर पाएंगे क्या? हम लोग यूजर क्यों ऐड करेंगे भाई यहाँ पे? यूजर ही तो ऐड करेंगे। हम लोग LUSR MGA.MSC में डोमेन यूजर्स को मैनेज करेंगे क्या? No, BSC.MSc. अंकित, प्लीज रिप्लाई। हाँ सर। डोमेन का बोलिए यूजर सर। कहाँ बनेगा? सर्वर में बनाएंगे या क्लाइंट साइड में बनाएंगे? कहाँ पे बनेगा? सर्वर में सर। तो यहाँ पे हमको कोई अकाउंट का जरूरी है? क्लाइंट साइड में कोई अकाउंट का जरूरी है? ये सुनो, नहीं नहीं, क्लाइंट में कुछ तो नहीं बचा रही सर। तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? सर मेरा क्वेश्चन था कि ये जो यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर रहे हैं सर, ये जरूरी है क्या पासवर्ड चेंज करना हमेशा? हाँ, ऑब्वियसली सिक्योर पासवर्ड देना है, नहीं तो कोई भी आके एडमिन को लॉगिन कर लेगा ना। ओके, ठीक मान है लो सर, तुम एडमिन हो, बस यही था। तो उस एडमिन तुम्हारा हम्म, कंप्यूटर में, मान लो तुम किसी को यूजर्स राइट्स दे रहे हो, मान लो तुम्हारा एक फ्रेंड है, उसको तुम यूजर्स राइट दे रहे हो। तो जब तुम उसको यूजर राइट्स दे रहे हो, उसका नाम से कोई आईडी बना रहे हो, तो तुम क्या एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड शेयर करोगे कि भाई ये नहीं पासवर्ड है, ये हैक कर लेना? ऑब्वियसली नहीं। एडमिनिस्ट्रेटर तो सर नहीं सर। एडमिनिस्ट्रेटर हैव एडमिन राइट्स, यूजर हैव यूजर राइट्स। यूजर हम्म, के पास एडमिन का राइट्स होता है? नो। हम्म, यूजर हैव एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड? नो। जी, ओनली हाँ IQ। सर। हम्म। एनी क्वेश्चन? सर एक चीज पूछना नहीं। था, एडमिनिस्ट्रेटर के पास सर यूजर का तो प्रोफाइल मतलब वो आईडी रहता है ना सर, वो कभी भी उसको रिसेट कर सकता है। देखो, एडमिनिस्ट्रेटर का प्रोफाइल, यूजर का प्रोफाइल सेपरेट है। वो तो ठीक है ठीक है। सर, मतलब वो नहीं हाँ। बोल रहे, जैसे सर मान सपोज कि कोई यूजर है, ठीक है सर, हम्म। वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहा है, उसने रेजिग्नेशन डाला, अब उसका जो उसको एसेट्स मिला हुआ है वो हम्म। गया वो रिटर्न करने के लिए, उसने वहां पे हम्म। रखा और वो आ गया। अब हम्म। उसने तो अपना पासवर्ड लगा के रखा था यूजर ने, हम्म। जो एडमिन को तो पता एडमिन नहीं के पास उसने सब सब। कुछ राइट्स है भाई। एडमिन चाहे तो यूजर का पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं, यूजर्स को डिसेबल कर सकते हैं, यूजर को डिलीट कर सकते हैं। एडमिन के पास वो राइट्स है। बस यही पूछना था सर, क्योंकि ये हम्म। देखा हुआ है मैंने। यस। क्योंकि तुम्हारा जितना भी सारे कम, मान लो तुम कोई ऑर्गेनाइजेशन में अपना IT एसेट्स को मैनेज कर रहे हो, तो सबसे पहले तुम क्या हम्म, करोगे? उसका HR के साथ कम्युनिकेट करोगे कि सर, आप जो इस यूजर के लिए बात कर रहे हो, ये यूजर का नाम क्या है, सब कोड क्या है, उसके हिसाब से होस्ट नेम बनेगा, उसके हिसाब से यूजर का मैपिंग होगा। तो सारे काम कौन करेगा? दैट एवरीथिंग डन बाय द एडमिनिस्ट्रेटर ओनली। और जो सिस्टम हम डिलीवर कर रहे हैं, वट एवर द सिस्टम, वट एवर द डेस्कटॉप, वट एवर द लैपटॉप आई डिलीवर टू द यूजर्स, दैट सिस्टम मस्ट बी ज्वाइन टू वेयर? वर्क ग्रुप और डोमेन? दैट मस्ट बी ज्वाइन टू Domain. डोमेन। क्लियर अंकित? यस सर। लेकिन यस सर। डोमेन ज्वाइनिंग करने से पहले जो तुमको करना है, ये सारे चीज करना है। ऐसा नहीं कि यू डायरेक्टली इंस्टॉल OS एंड वट एवर द होस्ट नेम, वट एवर द IP इज देयर, यू डोंट चेंज एंड यू डायरेक्टली ज्वाइन टू द डोमेन। नो, you first change the basic information when you are already changing the basic information, and after that you are changing the domain. Clear?
Yes, sir. Yes, sir. So that's why what I do, I also disable this another account also. Admin 2 I don't need, only record the building administrator, because building administrator help you in every condition. Because what it's member of? Building administrator, the computer slash domain. When system join on work group, that time also helping you. And when system join to the domain, that time also helping you. That's why this building administrator is required, because that building administrator helping you to every condition. I hope everyone understands why we are only active one account. Yes, sir. Voice. Yes, sir. देखो बेसिक इंफॉर्मेशन चेंज करने में 11 of 12 हो गया. What is the name? Computer name is Computer Computer 2. 2. IP addresses what I'm assign 192.160.1.30. सबसे पहले मैं IP असाइन करेंगे कौन सा 1.30 को असाइन करेंगे. Because 1.10 and 1.20 already assigned, right? So that's Yes, why sir. what I assign 192.160.1.30 2.5 gateway 1.1 DNS 192.168.1.10. Click on OK. Internet Protocol version 6 I wants to uncheck, then click on OK. Then click on close and then click on firewall settings, right? Here also just go to advanced settings. Inbound rules. Then searching with F. Here also enable for both profile. What profile? One profile enable for private and public, and one profile provide enable for the domain also. But what purpose only? ICMP v4, not for ICMP v6. Okay, remember it. And now is it possible to restart the machine? Yes, you are done already Yes. all the changes. ये जो हम लोगों ने changes किया, where we are doing all the changes, in work group or domain? Work group. Work Work group. group. Work group. Ankit, Abhijit, Jyoti, Kiran, where it is changed? In work group or domain? Work Kiran, group, sir. Kishore, Work group, sir. Work Shivani, group, sir. everything we are changing the basic, all the information from server side, client side in work group. Okay? Because server also were available in work group. Computer 1 were available in work group. Computer 2 were available in work group. In work group, Work you are group. already changed the basic information. Everyone clear? Please turn. Yes, Yes, sir. sir. Administrator is username, password is abcd@1 2 3 4. 1, 2, Who 3. is connected with server 1? Server 1 से कौन connected है? Computer on. Computer 1 or Computer One 2. computer two. Computer 1 and IP computer two. 192.160.1.20. And who is connected? 1.30 also. Clear everyone? Please confirm. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Because where we are available, हम लोग कहाँ हैं? Where we are present right now? We are already in 1.10. हम लोग कहाँ पे है? 1.10 में है. So where it is connecting to 1.10 connected with 1.20 and 1.30. 1.30. 1.10 से 1.30 और 1.20 present है. अच्छा यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट क्यों आ रहा है? बिकॉज इट्स ऑलरेडी रिस्टार्टिंग राइट नाउ. देखो कंप्यूटर 1 ऑलरेडी बंद हो चुका है. नाउ इट्स क्लीनिंग अप. इज इट वर्किंग राइट नाउ? इट्स वर्किंग राइट नाउ. जब सिस्टम बंद रहेगा, व्हेन सिस्टम इज टर्न ऑफ, that time you are not getting the ping status. When system turn on, that time you are getting the ping status. Everyone clear? Please confirm. Then I go to Yes, sir. next. Yes, Yes, sir. sir. Clear. बहुत लोग इसी को क्या पता है, सर इंटरनेट इज नॉट देयर, दैट्स व्हाई पिंग इज नॉट कमिंग. ब्रो, दिस इज नॉट द इंटरनेट इशू, बिकॉज वी एवरीवन नो it's all IPs are private IP, not the public IP, and we are not used any internet IP. These all are the private IP. Right now, don't connect the internet. अभी कोई internet connection नहीं है. These all computers are connected in a intranet or LAN or same network. Because in this mode, which is working, in this mode, the particularly the virtual network is working. Everyone clear? Please confirm. Because I have any physical switch? क्या मेरे पास कोई अभी इस condition में physical switch है? No. What No, only sir. switch is available? Virtual switch helping me.
तुम जब एनसीपीएल और सीपीएल में जाओगे ना, तो तुमको ये दो तरह का एडाप्टर देखने को मिलेगा, वेर यू कैन सी इन द होस्ट पीसी इफ यू यूज द VMR। नॉट ओनली VMR, यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन। तुम हाइपर भी करोगे तो भी हाइपर भी के लिए अलग एडाप्टर रहेगा। इफ यू यूज द VMR also have a separate adapter. If you use the Oracle, that time also you can see different adapter. Why? Because that how the computers are communicate to, that is all communicated with the virtual network। Everyone clear? Don't forget voice mic response। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Clear. और जो प्रैक्टिकल नहीं करेगा, नो साउंड। जिसका प्रैक्टिकल का कोई आइडिया नहीं है, हु डोंट डू प्रैक्टिकल, नो क्वेश्चन, नो साउंड। व्हाट इज द IP? The computer 2 IP is 1.30, computer 1 IP is 1.20। Right now, where I log on to computer 2 administrator or computer 1, this is the computer 1 administrator। Computer 1 administrator is one name is administrator, password is 12345, and then log on here। Computer 2 also doing the same, but it's also updating right now। So right now where I go, right now I just show you one more thing। मैं तुम लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, देखो तुमको पिंग के बारे में क्लियर हो जाएगा। बहुत लोगों का यही क्वेश्चन है, सर व्हाई यू आर नॉट गोइंग टू टर्न ऑफ द फायरवॉल, व्हाई यू आर ओनली एनेबल ICMP v4 but they are already in silent mode। Now let's see। So first of all, where I go, just go to firewall.cpl। If you tell me, sir, in this way you are already allowed the ICMP v4, why sir? Now let's see। अच्छा, who have no idea about ICMP v4, please raise your hand। किसका किसका ये फायरल सेटिंग समझ में नहीं आया, प्लीज रेज योर हैंड। बिकॉज कम्युनिकेशन नॉट डन ना, दैट्स व्हाई आई हैव ए कंफ्यूजन। या आई नो, तुम्हारा मेडिसिन तो पता नहीं है, बट मेरा मेडिसिन पता है। अनम्यूट प्लीज, अंकित अनम्यूट प्लीज, अंकित अनम्यूट प्लीज, क्विकली। हाँ, 11 of 18, जल्दी, प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा। अनम्यूट 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 अनम्यूट। अच्छा, नाउ लेट्स सर सी। अनम्यूट कर दो। पता नहीं अनम्यूट किया सर, हो नहीं रहा। इसीलिए तो बोल मैं कैसे रहा है? मेरे तरफ से भेज रहा था। तो एवरीवन अच्छा। सी 1.20 को सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। देखो 1.20 राइट नाउ पिंग इज ऑनलाइन, राइट? पिंग चल रहा है। इफ यू टेल मी यस सर सर। हाउ टू टर्न ऑफ, मान लो तुम प्राइवेट एंड पब्लिक के लिए टर्न ऑफ कर दो, डिजेबल कर दो सेटिंग्स को, तो ये चला गया। डोमेन के लिए भी मैं डिजेबल कर देता हूँ। राइट नाउ इज पॉसिबल टू विजिट द पिंग, क्या अभी पिंग मिलेगा? देखो क्या आ रहा है, No. No. टाइम Time आउट। क्या आ out. रहा है, व्हाट इज गेटिंग टाइम आउट। रिक्वेस्ट टाइम टाइम आउट। आउट। Time तो out. विच वन इज वर्किंग फॉर पिंगिंग पर्पस? पिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल काम कर रहा है? द ICMP ICMP v4 v4। is Yes. working। Now clear, Ankit? हाँ सर। If I enable again for private and public, is it working? Yes, because computer 1 also available in work group, सर दोनों computer को server इनेबल 1 करना also होगा ना in सर। available in work group। तो everyone see it's working। अभी तुम बोलोगे सर यहाँ पे डोमेन के लिए कब काम करेगा? When system join to the domain, जब सिस्टम डोमेन के साथ ज्वाइन रहेगा, दैट टाइम डोमेन इज रेस्पॉन्सिबल। सर उस टाइम हम प्राइवेट पब्लिक को बंद कर सकते हैं? यस। When system join to work group, if you disable domain, no problem। When system join to the domain, if you turn off the firewall.cpl, if you disable for private and public, it's okay, but you must enable for the domain only। क्योंकि डोमेन के लिए कौन काम करेगा? डोमेन काम करेगा। When system join to work group, that time who is responsible? Private and public। प्राइवेट एंड पब्लिक। सर ये भी आपने शेयर किया था? यस सर, यस ये भी सर। मैंने शेयर किया था। यहाँ पे पूरा एकदम हेडलाइन दिया हुआ है। क्या हेडलाइन है? रीड दिस लाइन। ICMP v4 ठीक है, प्राइवेट प्लीज पब्लिक। इनेबल प्राइवेट एंड पब्लिक फॉर आईसीएमपी फॉर वर्क ग्रुप पब्लिक। हाँ। एंड डोमेन पर्पस फॉर द डोमेन। बस। यस Yes, सर। sir. यस Sure. सर। एनी कंफ्यूजन अप टू नाउ? No, No, sir. sir. Clear. हाँ सर। हमको तो नहीं मिला है सर, इसीलिए तो इस बैच में असाइन हुए हो। मिला तो सही। पता नहीं सर, सॉरी टू मेरे में तो डिस्टर्ब नहीं यू। मिला सर, बट बोल हम ही रहे हैं अरे सर। है यार, पता है तो भाई, क्या किसका कितना दूर दूर है हमको तो पता है। यू हैव मल्टीपल मेडिसिन, दैट मेडिसिन यू आर गेटिंग फ्रॉम हियर। ये मेडिसिन तुमको अभी मिलेगा। वॉयस प्लस रिस्पॉन्स प्लीज। तुम किधर जाओगे सर भाई? ये सब प्रैक्टिस कर लोगे तो भाई चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, यू डोंट फेस एनी सिंगल प्रॉब्लम इफ यू ओपन ऑल द स्टेप्स। एंड इफ यू टेल मी नो सर आई एम VIP, तब VIP रहो।
रेस्पॉन्स प्लीज। भेज दिया सब लोग। हाँ सर, जस्ट चेक मिल गया सर। एवरीवन। So everyone Yes, sir. see, the computer one also communicate with server and computer two also communicate with server. तो क्या हम opposite side से भी check कर सकते हैं sir? Yes, you can. From 1.30 you can check 10 and 20. From computer one 10 and 30. From computer one server one 10 20 and 30. Both are communicated. हर एक communication होगा। हर एक system से तुम्हारा IP check होगा। ये मैं कल ही बताने वाला था लेकिन बेसिक करते करते पूरा टाइम ही खत्म हो गया। बिकॉज बिफोर कॉन्फ़िगरिंग डोमेन, डोमेन कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले तुमको सबसे पहले यू कैन चेक द आईपी एड्रेस, यू कैन चेक द होस्ट नेम, यू कैन चेक द फायरवॉल सेटिंग्स एंड यू कैन चेक द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट इज एनेबल और नॉट। एवरीवन क्लियर? प्लीज Yes, कंफर्म। sir. लास्ट, Yes, sir. Yes, sir. देन आई गो टू नेक्स्ट। तो क्या हम कंप्यूटर वन से भी चेक कर सकते हैं सर? यस यू कैन। What is the IP of computer one? 192.160.1.20. From 20 who is connected? 1.10 should be connected and 1.10. 1.30 should be connected. Everyone clear? Please confirm. Then I go to सर ये वाला चीज next. तो हम लोग सीएमडी में भी डाल सकते हैं ना सर? हाँ 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 सर, आपने यहाँ पे क्यों डाल रहे हो? क्योंकि शॉर्टकट। और यदि बोलोगे नहीं सर आप सीएमडी में जाओ, थोड़ा घुमा के जाओ, नो प्रॉब्लम। घुमा के मतलब क्या, यहाँ पे कंट्रोल सी काम करेगा, उधर कंट्रोल सी में पॉज हो जाएगा। यहाँ पे कंट्रोल सी करेंगे तो क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। देखो ब्रेक हो गया। इधर भी ब्रेक होकर कंट्रोल सी से ब्रेक। बट इसमें कंट्रोल सी करो, ये पॉज हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। कैन आई कंटिन्यू? यस। इफ यू टेल मी सर वाई माइनस टी, तुम माइनस टी नहीं दोगे तो क्या होगा? माइनस टी नहीं दोगे तो तीन चार चार बार बार आके होगा बंद हो सर। जाएगा। 1 2 3 4 एंड देन क्लोज इज वर्किंग। क्लियर सर वो एवरीवन? सारी एंड इफ यू वो टेल मी सारी ये माइनस टी बात व्हाट इज सारी गोइंग ठीक ऑन? है। माइनस टी कंटिन्यू। जब तक तुम रन करोगे, जब तक तुम क्लोज नहीं करोगे, तब तक वो चलेगा। क्लियर सर अगर एवरीवन? माइनस पिंग टी नहीं कमेंट करेंगे वॉइस तो फिर माइक वो सारी रेस्पॉन्स, देन रुकता आई है। गो टू नेक्स्ट। Yes, हाँ sir. सर, Yes, Clear, sir. sir. यू यस कैन सर। चेक द सोर्स टू डेस्टिनेशन। पिंग से क्या चेक किया जाता है? सोर्स टू डेस्टिनेशन चेक किया जाता है। यस सर। ओके, सो कंप्यूटर थ्री से टू से भी चेक करेंगे। सेम प्रोसेस हियर आल्सो। जस्ट गो टू हियर आल्सो। व्हाट इज द आईपी ऑफ दिस कंप्यूटर? ये इसका आईपी कौन सा है? 1.30। तो 30 से 30. कौन कौन कनेक्टेड होगा? 20 or 20. 1.10 also Percent. and 20 also. 1.20 also. Clear everyone? Please confirm. Yes, यस sir. सर। Yes, sir.
तो ये हो गया तुम्हारा क्या, ये है कम्युनिकेशन। नाउ वेरी गो, नाउ यू आर गोइंग टू एडिंग द एडीडीएस रोल। अभी तुम क्या करोगे, एडीडीएस रोल को एनेबल करोगे। So first of all, where I go, just click on manage and then click on add role and features. The administrator account has a strong password. What strong password, guys? यहाँ पे यूजर नेम क्या है, यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, बताओ पहले, क्विकली प्लीज, क्विकली। Administrator. ABC यूजर नेम, एबीसी यूजर नेम, administrator Administrator. पासवर्ड। ABCD ABCD 33 order 1 to 2 1 to 3 4. What is the host name? जल्दी जल्दी जल्दी, क्विकली। होस्ट नेम। हेलो, AD server हेलो। सर्वर सर्वर 1 सर्वर server आईपी एड्रेस। 192.168.1.10. 192.168.1.10. 10. क्लियर। Yes, sir. ये भी मेंशन है, कौन सा, सेकंड पॉइंट में। नेटवर्क सेटिंग सजेस्ट व्हाट आईपी, नेटवर्क सेटिंग सजेस्ट स्टैटिक आईपी आर मेंशन। क्लियर एवरीवन, प्लीज कंफर्म। यस सर। yes Yes, sir sir. Next, where I go, just click on next right now. Then where I go, role based installation, feature based installation. Configure by a single server by adding role service and features. Then where I go, just click on next right now. What is the server name? Server name is server 1. IP addresses is 192.168.1.10. Operating system is what? Windows Server 2022 data center evolution. Then where I go, click on next. Right now, everyone see which role I enable here. Must Active enable which Directory. role? Just only enable the Active Directory domain service role, ADDS role. What is ADDS configuration? What is ADDS definition? This is very important for interview. यदि किसी का क्वेश्चन है, just only go through the Windows administration theory part. You always remember what is Active Directory. These questions are very, very important for interview. Everyone have idea or can I repeat? Quickly, जल्दी बताओ। Everyone have idea or am I repeat? Shall I repeat the Yeah, start yes, sir. Repeat, briefly? बस। यही पे तो प्रॉब्लम है भाई, स्टडी करो यार। एक्टिव डायरेक्टरी इज व्हाट, एक्टिव डायरेक्टरी इज अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। क्योंकि इसका क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, दिस इज स्टोर बेसिकली करता है। रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोर इंफॉर्मेशन। इसका काम ही है इंफॉर्मेशन स्टोर करना। What mentioned by Microsoft? Active Directory domain service. What responsible? Store information. What information they are store? ये क्या information को store करता है? About objects on the network. Objects means user is also one type of Users. objects. Computer is also one type of objects. Any type of services. Just for example, you are sharing printer. That also available in Active Directory. You are sharing any file. That also activated it, that is also manages in with the help of directory only, क्योंकि हर एक information share होता है। Whatever Yes, the sir. information, whatever the resources are available on the network, that all information stored in the Active Directory makes this information available to users and network administrator। ये बेनिफिट किसको मिल रहा है? वी हैव ए User सेंट्रलाइज्ड administrator. डेटाबेस। मेरे पास एक बड़ा नेटवर्क है, मेरे पास एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेटाबेस है। आई हैव ए वन सिंगल कंट्रोल टू दिस डेटाबेस। मेरे पास एक सिंगल कंट्रोल का डेटाबेस है। हु कैन गेट दिस बेनिफिट टू एक्सेस? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैव फुल अथॉरिटी, यूजर्स हैव लिमिटेड अथॉरिटी। यूजर्स के पास क्या अथॉरिटी है? यूजर्स हैव लिमिटेड अथॉरिटी, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैव फुल अथॉरिटी। Yes, sir. ADDS uses domain controller for authentication purpose, for verification purpose, for security purpose. ADDS what use? ADDS use domain controller. What purpose basically ADDS use domain controller? To give network user access to permitted resources. Yes, sir. If I log on to client side, मैं client में जाके login करेंगे, we are log on to the client side, client request received by the server. क्लाइंट का रिक्वेस्ट कौन रिसीव करता है? क्लाइंट रिक्वेस्ट Server. रिसीव बाय द सर्वर। सर्वर टेल मी, सर्वर चेक द डायरेक्टरी डेटाबेस।
सर्वर पहले क्या चेक करता है? डोमेन कंट्रोल बोलेगा, डोमेन कंट्रोलर फर्स्ट वेरीफाइज द डेटाबेस फ्रॉम एक्टिव डायरेक्टरी. एक्टिव डायरेक्टरी tells yes, user ID password is correct. Then domain controller granted this permission. Yes, this user are able to log on. Finally, users are able to log on. Everyone clear? Authentication and authorization. Who Yes, is sir. working for Yes, authentication sir. and authorization right now? Because ADDS. domain controller ADDS. responsible. Domain controller provide permission. एक्टिव डायरेक्टरी के पास क्या है? डेटाबेस है. Active Database. Directory have this all credential, users credential, users password, user belongs to which group, user belongs to which computer, that every information are stored in Active Directory. But who provide the security? That provided the security by the domain controller. Yes, To sir. give network user access to permitted resources. Who are permitting the resources? Resources को permitted कौन करता है? Who provide the Domain permission? controller. Who provide the permitted resources? The domain controller providing the permission. And how? Anywhere on the network में, in which process? Within a single logon process. Every username and password is separate. हर एक यूजर का अपना अपना सिंगल यूजरनेम एंड पासवर्ड है. बट वेयर द डेटाबेस ऑल आर अवेलेबल. ये हर एक डेटाबेस है कहाँ पे? दैट ADDS ऑल में. डेटाबेस आर अवेलेबल इन एक्टिव डायरेक्टरी. हु Active प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन? हु प्रोवाइड द सिक्योरिटी? हु प्रोवाइड द ग्रांटेड? दैट ग्रांटेड बाय द डोमेन कंट्रोलर. एवरीवन क्लियर? प्लीज कंफर्म. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Thank you. everyone 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 Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes. तुम बोलोगे सर हमको अभी भी क्लियर नहीं हुआ. नाउ प्लीज रीड दिस लाइन. नाउ प्लीज रीड फ्रॉम योर साइड्स. बॉयज क्लास क्विकली 11:33 जल्दी. Active Directory Domain Services (ADDS) stores information about users, computers, and other devices on the network. ADDS helps administrators securely manage this information and facilitates resources sharing and collaboration between users. Things to note: to help ensure that users can still log on to the network in case of a server outage, install a minimum of two domain controllers for a domain. ADDS requires a DNS अरे server to be. आराम से भाई. मैंने क्या कौन सा मार्क किया? अच्छा, वहां तक मार्क मैं किया कौन था सा मार्क किया? सर, ऊपर गई तुम सर. तुम जो तुम जो पेपर की तरह रीड कर रहे हो, कुछ समझ में आएगा इस तरह से? यस और नो? सर हम समझाने वाले थोड़ी है सर. लाउडली यस और नो? सर हम समझाने वाले थोड़ी है सर, मतलब अरे तो हमको वही तो बोल रहा हूँ. तुम पहले हड़बड़ी क्यों कर रहे हो? जितना मैंने समझा उतना पढ़ो ना. जस्ट ओनली मार्किंग दिस लाइन. पहले एक्टिव डायरेक्टरी, उसके बाद डीएनएस एडीसी बाद में समझेंगे. ओके सर. वेट. तो क्या बता रहे? एडीडीएस एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस स्टोर इंफॉर्मेशन. इसका काम क्या? इंफॉर्मेशन स्टोर करना. सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स कौन कौन है? हु इज ऑब्जेक्ट्स? यूजर is also one type of objects. Computer is also one type of objects. Other devices also one type of objects. Where these all objects, whatever the objects are available on the network, whatever the objects are available on the network, that all information were saved. That all information saved to the Active Directory. I am admin. I am a central admin. I am a IBM admin. I am a DCS admin. When you are going to an admin, ADDS helps. Who helping you? How to manage ADDS. 500 computer? How to manage 5,000 computer? You only manage with the help of 500 computer or 5,000 computer from only ADDS database. If you have ADDS database, you can control, you can manage. So who helps administrators? Group of admin को ADDS. कौन help करता है? Who helping to the group of admin? ADDS helps administrators. What helps? Securely manage this information. What information? User information, computer information, other devices information they are managing. Facilitate resources sharing and collaboration between users. Where you are collaborate, किसके साथ तुम collaborate करोगे? Where you are providing the collaboration, you are directly collaborate with users. तुम collaborate करोगे users से. Yes, sir. Everyone clear? Please Yes. confirm. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So without Active Directory, you can manage anything? No, sir. No, sir. No, No. not possible. कभी नहीं possible है. You are only searching, sir, in which computer I will go, in which computer I will check. Any users directly call you to only maintain and manage from the server, because in server you have the Active Directory database, centralized database. Clear everyone? Please confirm. Yes, Yes, sir. sir. अच्छा.
अभी किसी ने क्वेश्चन किया था, सर 192.160.1.10 व्हाई यू आर मेंशन एज अ डीएनएस, रीड दिस लाइन क्विकली। LDS ADDS requires a DNS server to be installed on the network. If you do not have have a DNS server installed, you will be prompted to install the DNS server role on this machine. एडीडीएस रिक्वायर्स, किसको चाहिए डीएनएस? एडीडीएस, एडीडीएस को चाहिए। एडीडीएस रिक्वायर्स डीएनएस सर्वर ऑन द नेटवर्क, नेटवर्क में। ऐसा नहीं कि अपने पास है तो नेटवर्क में नहीं है। कंप्यूटर 1 2 3 में डीएनएस नहीं है, इज इट शुड बी कनेक्टेड विद द सर्वर? नेवर, कभी काम नहीं करेगा। डोमेन ज्वाइनिंग का मेन प्रॉब्लम आता है। इफ यू आर गोइंग टू ज्वाइन वर्क ग्रुप टू डोमेन एंड यू आर फेसिंग डोमेन ज्वाइनिंग प्रॉब्लम, द डोमेन एडीडीसी domain controller should not be contracted. The main problem coming from the DNS and main problem coming on the domain name। सिर्फ डोमेन नेम और डीएनएस से पहले प्रॉब्लम आता है। तो वो रिक्वायर्ड, एडीडीएस रिक्वायर्स डीएनएस सर्वर। एडीडीएस को चाहिए क्या? एडीडीएस को डीएनएस सर्वर चाहिए। वेयर इट इज रिक्वायर्ड? ऑन द नेटवर्क। इफ यू डू नॉट हैव डीएनएस सर्वर इंस्टॉल, यदि डीएनएस सर्वर इंस्टॉल नहीं है, you will be promoted to install DNS server role on this machine। this machine means this machine means this machine means this Server one. machine means this ADDS machine means Server one. this server machine means clear everyone? Yes, आपने sir. क्यों Yes, sir. 1.10 असाइन किया? बिकॉज सर्वर 1 आईपी एड्रेसेस इज 1.1.10, दैट्स व्हाई ऐड 1.10 एज मार्किंग एज a DNS। एवरीवन क्लियर ऑन दिस सर्वर? Yes, Yes. sir. Yes, sir. नाउ क्लियर व्हाई आई मेंशन सेम आईपी एंड सेम DNS? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Clear. Because if you can configure manual DNS as a additional DNS, it's okay. You are entering alternate DNS, you can create another DNS, it's okay. But you must have a particularly Active Directory DNS। यदि तुम्हारा Active Directory के साथ DNS नहीं है, your domain controller domain should not work। In organization, n number of issue, the communication issue happening from DNS only। सिर्फ डीएनएस नहीं होने के कारण सबसे ज्यादा इशू होता है ऑर्गेनाइजेशन में। वेबसाइट नॉट ओपन, रिसोर्सेस आर नॉट ओपन, डोमेन ज्वाइनिंग नॉट पॉसिबल, योर डोमेन कंट्रोलर एंड क्लाइंट आर ping, but ping is possible, you are checking the server communication done, but you are not able to join the domain। that only problem coming from DNS only। ये प्रॉब्लम सिर्फ डीएनएस से आता है। everyone clear? Yes, Yes. sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. Clear. Now click on next and then simply restart the destination server। Click on yes, then click on install। What role he wants to add here? यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा रोल एनेबल किया? Only ADDS. ADDS role। ADDS. Everyone clear? Please confirm। Yes, sir. Yes, sir. Clear, Yes. sir. ये सब डिस्कशन हुआ था। ये तो चलो Yes, हो sir. गया। एवरीवन डन द एडीडीएस रोल, इट्स ओके। हाउ टू एक्टिव एडीडीएस रोल, एवरीवन नो। बट इतना ये जो लाइन तुम लोगों ने स्टडी किया, दैट यू आर डिस्क्राइब प्रीवियसली, मेरा बैच में तो हुआ था। Yes, बट sir. इन आपका अनदर Yes, बैच, sir. अनदर टीचर बैच आल्सो डन हुआ था, यस और नो? Yes, sir. अरे बोलो भाई, हाँ ना? आपका बैच में तो सर हुआ था, अरे आपका मेरा बैच में। बैच में तो No, हुआ था sir. तो पता है। Yes, बाकी लोग बताओ, जो लोग मेरा बैच से नहीं था। Sir, almost everyone is from your batch only, sir. हाँ, यस। वो कहाँ गया? अंकित, अंकित। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर और एक मतलब कौन बंदा सा? था और एक बंदा था सर जो इंग्लिश समझ रहा था, उसको थोड़ा पूछ लीजिए तो। क्या क्या? हिंदी समझ में। If you proper communicate, then I will be helping you। Please। I have already asking one question but no reply। Okay, nice।
एनर्जी बहुत स्ट्रांग चाहिए भाई, साबर के लिए एटलीस्ट। गर्मी है। Everyone see ADDS role is already installed, right? But still server is available in Workgroup. Yes, still server available in Workgroup. Clear? Yes, sir. So now we are configuring what? Now we are configuring DNS. domain. So right now the server available still in Workgroup. Yes. Yes, sir. If you check here, who am I? What is visible? Server 1/admin. Everyone clear? Please confirm. Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. Right now where I go, just click on the promote the server to a domain controller, where you can see this particularly that DSRM password is coming in the next slide. इसके बाद जो आता है. Yes, sir. So everyone see there is total 3 settings are available. First settings, when you are configuring additional domain controller or as a backup domain controller, that time first settings. When you create a child domain controller, जब तुम child domain create करोगे, when you create a subdomain under the division mail.division.com, cloud.division.com, us.division.com, uk.division.com you are creating, that time is the child domain. And child domain में सर difference क्या है? डोमेन You वही हुआ can, ना सर कि ईमेल आईडी वगैरह जो डालते हैं वही क्या सर यहाँ पे वो तो डालेंगे? जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, अच्छा। क्योंकि मेल एड्रेस मेल जो तुम डालते हो दैट इज ऑलरेडी यूजिंग टू वे, वन माइक्रोसॉफ्ट 365, अदरवाइज दे आर यूजिंग एक्सचेंज सर्वर। वो कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट टोटली सेपरेट है। सर जस्ट दूसरा क्या फॉर बताया? एग्जांपल, हाँ, एक माइक्रोसॉफ्ट 365 और एक क्या बताया सर आपने? एक्सचेंज सर्वर, एक्सचेंज माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, अच्छा। जो आउटलुक में होता है ना वो हाँ एक्सचेंज सर। सर्वर एंड एक्सचेंज क्लाइंट में होता है। एंड माइक्रोसॉफ्ट 365 is activation mode where you can buy the E3 license or E5 license, right? So this is what here I'm just clicking on what? Here I'm clicking on the last, add a new Ready forest. for Because जब तक हम forest नहीं बनाएंगे, if I don't create forest, you are not able to create the domain controller. You first create the domain controller, then you are able to configuring the DSRM password, reset the DSRM password. You can do the Active Directory backup. Everything is possible after configuring domain. Clear everyone? Please confirm. Yes, sir. Yes, sir. So what domain am I mention here? I just mention here division.com. That's all. Then where I go click on next. Now you can see here the DSRM password is present here. Everyone remember, don't forget voice mic response. What is used for DSRM password? Directory service restore mode password. What is the meaning of directory service restore mode? Directory service restore mode का meaning क्या है? When you are facing the active related issue, active directory related issue, you wants to troubleshoot the active directory. That time this particularly password is very much important. Yes, sir. Recovering is only possible if you enter the DSRM password. Backup is possible if you have domain administrator password, it's okay.
But when you recover, that time the work group administrator also not working and domain administrator also not working. What is working only? Only working the DSR. DSRM administrator password only. So that's why always remember this password. And you can also use to reset this password within NTDS util command line interface also. So what password I mentioned right now today? I just mentioned same password abcd at the rate 1234, abcd at the rate 1234. Then where I go click on next. Then where I go click on next. Then where I go click on next. Now very important question. That question also very much important in interview. What is the Active Directory location? What is NTDS folder? Where NTDS folder every database are available. NTDS folder stands for what? NT Directory Services, which is a Microsoft Active Directory database. And what Yes, information sir. they are stored? They are storing the all objects information, user information, group information, computer information, other objects in Active Directory. And what is the location? C drive Windows NTDS and ntds.dit. ntds.dit folder के अंदर ये फाइल्स रहता है. Everyone remember this particularly theory part. That theory is very much important in organization. What is Active Directory and what is NTDS location? Please describe. Okay. Voice Yes, plus sir. very important Yes, sir. Yes, in sir. interview. I hope everyone see, right? Already Yes. sent. In the same picture, I already have the Active Directory definition as well as the NTDS database informations are also there. Please go through the theory also. Sir. Okay. Theory अब Yes, यदि sir. हम describe करेंगे, it's taking too much time. Just only describe the short theory. What the informations are available in this location? All objects information. Users also, computers also, groups also, whatever the database are available in directory, that all information in this location. Okay. Voice plus. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Then click on next. Now this is what password. Everyone see the configuring the server as fast Active Directory domain controller in a new forest. Fast means the primary. इससे पहले कोई domain controller है? There is in previously I don't have any domain controller. This is my first domain controller. This is the first DC which is working as my new forest. The new domain name evision.com. This is also the name of the new forest. क्योंकि मेरा इस फॉरेस्ट में कोई डोमेन है नहीं. अभी कौन सा डोमेन बन रहा है? द फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर इज evision.com. दिस इज ऑल्सो द नेम ऑफ द न्यू फॉरेस्ट. तो ना तुम्हारे पास कोई जंगल में 10-15 पेड़ है, मैंगो ट्री इज देयर, देन बनाना ट्रीज इज देयर, तो वो सारे मिलके क्या बनता है? फॉरेस्ट बनता है. दिस ऑल आर कमिंग अंडर वन फॉरेस्ट. If in the forest have one tree, that is also coming under the forest. So here also same. Evision.com is a single domain controller. So single domain in that particular domain under the particularly all which is coming under the forest. सर एक फॉरेस्ट में कितना मल्टीपल डीसी, सब डीसी, सब डोमेन कंट्रोलर, एडीसी, पीडीसी, एवरीथिंग इज अवेलेबल? यस. सब कुछ एक ही डोमेन के अंदर रहता है. Can you describe it also? Yes. Tomorrow I describe about the child DC. इसके Yes, नेक्स्ट दिन sir. हम लोग सब डोमेन के बारे में डिस्कस करेंगे. हाउ टू क्रिएट सब डोमेन, how to configure सब डोमेन, that also I discuss. But when after complete Active Directory backup and restore, वो बैकअप एंड डायरेक्टरी रिस्टोर होने के बाद हम लोग करेंगे. वॉइस प्लस Yes, sir. रेस्पॉन्स प्लीज. Yes, sir. Yes, sir. यदि कोई मेरे से क्वेश्चन पूछे कि यू नीड व्हाट, आई नीड द एक्सटेंशन, टाइम एक्सटेंशन एंड द डे एक्सटेंशन. क्योंकि भाई ये सब 2 घंटा का टॉपिक नहीं. इसमें यदि हमको 4 घंटा मिल जाए तो बहुत अच्छा है. आराम से अपना तरीके से बता सकते हैं. Because that is not only the small concept, that is enterprise network. How you can deploy
That is very strongly recommendation. Yes, sir. Voice plus, no practical, no response is equal to totally zero. जितना response करोगे उतना अच्छा से clear होगा. Yes, sir. These two line have any question? Quickly, No. please. 52. No, sir. No, sir. Yes, The sir. the DNS server will be configured on this computer. This computer means which computer? This computer Server one. means Server. server one. The computer will be configured to use DNS server as a preferred DNS server. What is the preferred DNS server? देखो तुम लोग इतना बार प्रैक्टिस किए हो फिर भी भूल रहे हो. 192.168.110. What is the password? The domain administrator, the new domain administrator will be the same password of the local administrator of this computer. What is the password? The password is ABCD at the rate 1. इसका कॉन्सेप्ट कल यूज होगा जब हम लोग DSRM पासवर्ड को रीसेट करेंगे. सर टुमारो अगेन आर यू डिस्कस एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगरेशन? नो सर. और फिर से हम डिस्कस नहीं करेंगे. I hope everyone understand how to configure Active Directory voice mic response. Yes, Then I Yes, go sir. next. Yes, sir. Yes, sir. Understand it. Then click on next. And then ultimately you are getting the green sign key. Everything is fine. All prerequisite check successfully. Just click on install right now. Clear everyone? Please confirm. yes. Yes, sir. और भाई मैं सभी लोगों को बता देता हूँ ये जो तुम लोग IPS का बैच करो इसमें अटेंडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है. मतलब प्लेसमेंट का कॉल नहीं आएगा तो मत बताना प्लीज. वाइस है टॉक टू एच आर. क्योंकि भाई ये सारे चीज से पता होना चाहिए. अटेंडेंस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. टाइम इज 11:54 AM 28/4/2026. श्री चंदन क्लियर. श्री चंदन, रियलमी, पारमिता, किशोर, किरण. हेलो. Sir, clear, sir. Yes, sir. Everyone see this is the final result. What is the result? The successfully configure as a domain controller. So if you getting this result, यदि इतना दूर तक आ गया, it's mean everything is correct. Okay? Yes, sir. Especially for the no laptop. जो लोगों के पास लैपटॉप नहीं है देख लो. जो लोगों का सिस्टम स्लो है, सर आई हैव a slow machine when I turn on my server the system is going to hang. Sir, what can I do, sir? You see these particular steps n number of times. जिसका लैपटॉप है तुम 2 बार प्रैक्टिस करो, 3 बार में तुम्हारा समझ में आ जाएगा. नो लैपटॉप मोर प्रैक्टिस. साइलेंट इज इक्वल टू DI2. 0. बचने का कोई रास्ता नहीं. बचने का एक ही रास्ता है. इफ यू एक्सप्लेन, इफ यू डिस्क्राइब इन लाइव स्ट्रीम. उसके तुम लोग बाद को तो से ये भी प्रैक्टिकल तुम शुरू होगा लोग तो मेन तुम प्रैक्टिकल लोग उसके तो बाद. ये भी तुम लोग तो ये भी बता सकते हो सर मैं आज शेयर कर दो आप प्रैक्टिकल चेक करो. राइट और रॉन्ग? यस सर. Yes, sir. कब से करोगे? कब से करोगे? व्हेन यू व्हाट इज द डेट? परसों शेयर कर दो हाँ, सर. कब कब कल? परसों. टुमारो? Yes, sir. टुमारो? देखो तुम लोग रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहे. Yes, sir. ये सर नहीं, डेट बताओ कि सर कल से फ्रॉम करेंगे सर. टुमारो कल. आई विल शेयर माय लाइव स्क्रीन. Yes, sir. कल से करेंगे सर. कौन कौन रेडी हो? हु इज रेडी टू शेयर लाइव स्क्रीन? प्लीज रेज योर हैंड. यहाँ पे फिल्टर लगाओगे भाई तुम्हारा इंटरव्यू और फिल्टर हो जाएगा भाई. क्या करें? बिकॉज दैट यू आर गेटिंग द इंटरव्यू. तुम इंटरव्यू दोगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इंटरव्यू और फिल्टर इफ यू नॉट शेयरिंग योर स्क्रीन. फिर हमारा लैपटॉप नहीं है तो हम क्या करें?
तो डिस्क्राइब करो, जो है जो शेयर करेगा उसको हेल्प करो, तो भी प्रैक्टिकल हो जाएगा। एग्री और नॉट एग्री? Yes. जी सर। Yes, sir, agree.